So we know that chemistry happens in the world around you and not just in a lab. Matter interacts to form new product through a process called a chemical reaction or chemical change. Every time you cook or clean, it's chemistry in action. Your body lives and grows thanks to the chemical reactions. There are the reactions when you take medications, light a match, and draw a breath even. Plants apply a chemical reaction called photosynthesis to convert carbon dioxide and water into food, which is glucose and oxygen. It's one of the most common everyday chemical reaction and also one of the most important one because this is how plants produce food for themselves and animals and convert carbon dioxide into oxygen. Now we know about respiration, which is a total opposite process than photosynthesis, and we know that respiration, and we are respiring, right? We talk about combustion. Every time you strike a match, burn a candle, build a fire, or light a grill, you see the combustion reaction. I'm repeating, as I have been repeating in the last classes, that combustion combines energetic molecules with oxygen to produce carbon dioxide and water. When anything burns in the presence of oxygen, we call it combustion. Okay? Now we are moving towards page number 71, where energy changes in the chemical reactions have been discussed. All the chemical reactions involve energy. Energy is used to break bonds in the reactants, and energy is released when new bonds form in products. A molecule will be stable if there are more attractive forces and less repulsive forces. Attractive forces lower the potential energy of the molecule, ठीक है, and repulsive force increases the energy of the molecule. इसलिए molecule हमेशा वो stable होता है जो कि low energy में present होता है. ठीक है, एक molecule की chemistry को, जो कि molecule I'm talking about the product, ठीक है, उसकी chemistry को understand करने के लिए we must know the energy levels. ठीक है, we have studied about different chemical reactions, right? Basically, we studied two types of chemical reactions in the last class. One was addition reaction and the other one was decomposition reaction, right? अब कुछ ऐसे reactions होते हैं जिनके अंदर we see that energy is given off और energy is absorbed from the surrounding. कुछ ऐसे reactions हैं जिनमें energy को environment में दिया जाता है, give off किया जाता है, ठीक है, और कुछ ऐसे reactions होते हैं which basically absorb the energy from their surroundings और क्योंकि उन्हें ज़्यादा energy चाहिए होती है, जिसकी वजह से उनकी जो environment होती है वो ठंडी पड़ जाती है क्योंकि वो energy को अपने अंदर absorb कर लेते हैं. Got it? So as you can see from the slide, matter rusting or burning are common examples of chemical changes. Chemical changes involve chemical reactions in which some substances called reactants change at a molecular level to form new substances called products, and all those chemical reactions involve energy. However, not all chemical reactions release energy as rusting and burning do. In some chemical reaction, energy is absorbed rather than released. For example, in cooking. Cooking is also a kind of chemical reaction. ठीक है, उसके अंदर भी chemical reactions हो रहे हैं and we are supplying heat in it. ठीक हो गया. इसी तरीके से दो तरह के reactions होते हैं. दो तरह के एनर्जी चेंजेस होती हैं बेसिकली जिसके अंदर हम वो स्टडी करते हैं. रिएक्शंस में उन एनर्जी चेंजेस को बॉदर किया जाता है, स्टडी किया जाता है. तो टू टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक reactions and then we have the exothermic reactions. These are the endothermic changes and exothermic changes. We will be studying about them in detail. ठीक है, सो इन रिएक्शंस को अगर आपने कोई रिएक्शन को देखना है कि आपके पास टू रिएक्टेंट्स हैं, यू आर हैविंग टू रिएक्टेंट्स एंड यू वांट टू सी वेदर दे विल रिएक्ट विद ईच अदर और नॉट, ठीक है, तो उसकी एनर्जी प्रोफाइल को देखना बहुत जरूरी है बिकॉज इफ द एटम इज स्टेबल वन, ठीक है, अगर एक एटम जो है वो स्टेबल है, ठीक है, तो वो बहुत लेस चांसेस हैं कि वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेबल एंड एवरी एटम इज रिएक्टिंग विद द डिफरेंट एटम टू स्टेबलाइज इटसेल्फ.
ठीक है। अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो फिर एनर्जी प्रोफाइल डिफरेंट होती है, अगर वो स्टेबल नहीं है और बहुत अनस्टेबल है तो फिर एनर्जी प्रोफाइल जो होती है, उसकी एनर्जी का लेवल जो होता है पूरे रिएक्शन का, वो डिफरेंट होता है। अब हम मूव करते हैं, a chemical reaction that releases energy is called exothermic reaction. ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, आपको हीट रिलीज होती हुई नजर आ रही है, एज इन आप अगर कोई, आपके पास कोई बीकर है, beaker you know is an apparatus, is a glassware in your labs. If you hold a beaker or even a cup और उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और आप देखते हैं कि जो साइड्स है ऑफ द कप और द बीकर आर गेटिंग वार्म, then those kind of reactions are known as exothermic reactions. Okay, and they can be represented by a general formula. For example, reactants will be converted into products, and they will also be giving off extra energy. So exo means outside and therm means heat. Exo means outside and therm means heat. कुछ ऐसे reactions जो बाहर की तरफ energy release करते हैं, they give off the energy during a chemical reaction, they are known as exothermic reactions. Burning is the example of exothermic reactions. Okay, so these three examples have been given in your book that that are very important for you to understand and learn, because these are the examples of the exothermic reactions. First of all, if carbon in the solid state combines with oxygen gas, it will give off carbon dioxide gas and plus heat will be released. And then we are having this reaction. You are now familiar with this reaction because it is the burning of methane, and I have been repeating that methane is the large constituent of your natural gas. CH4 is known as methane. Methane gas will react with two molecules of oxygen gas and they will be giving us carbon dioxide, water and heat as well. तो ये बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है जिसमें मीथेन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करना है। हमें दो सिंपल चीजें मिल रही हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हीट इज आल्सो गिवन ऑफ. देन वी हैव आयरन. आयरन विल रिएक्ट विद सल्फर. This reaction will be giving us iron sulfide. It's of black color, and energy heat will also be released. Okay, so such reactions in which heat will be released are known as exothermic reactions. ठीक है, इन reactions को किस तरह से categorize किया जाता है? Exothermic reactions की तरह. Now we are moving towards another very important example, which is the formation of the lime. Calcium hydroxide, it has the formula Ca bracket OH twice. It means that calcium has combined with two hydroxyl groups. OH is known as hydroxyl. Okay, so calcium will be combining with two hydroxyl molecules. ठीक है, OH collectively is known as a hydroxyl molecule. It is also present in water. So calcium is when combined with two hydroxyl molecules. And sorry, I was reading Sanabil's question. The formation of slake lime calcium hydroxide is formed when calcium oxide is combined with water to give slaked lime. It is CaOH twice. This reaction occurs when water is added to dry Portland cement to make concrete, and evolution of heat is observed, energy is observed. The reaction is very exothermic. Whenever you make CaO with water, then you see in the beaker, then you see the walls of the beaker are getting warm, which is indicating that calcium hydroxide is released, is formed and heat is released. I'm on page number Taha on 71. We are studying about exothermic reactions. Kindly open your page number 71, everyone. Okay, now there are other sort of reactions, endothermic reactions. Endothermic reactions are the reactions where energy is absorbed. Okay, where energy is absorbed. These are known as endogenic reactions or the endothermic reactions. This type of reaction can also be represented by a chemical equation.
रिएक्टेंट्स के साथ एनर्जी मिलेगी और हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे. फॉर एग्जांपल हमें एनर्जी को प्रोवाइड किया जाएगा, हमें सनलाइट प्रोवाइड, हमने हमने उस रिएक्शन को सनलाइट प्रोवाइड करनी है, हीट प्रोवाइड करनी है, और एट द एंड वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स. ठीक है, we have to supply energy, we have to supply heat on in those reactions, to trigger the chemical reaction. For example कोई reaction अगर हो रहा है तो हमने उसके अंदर heat और light को introduce करना है. ओके, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल है इट इज वेरी स्लो इन प्रोड्यूसिंग एनी अदर थिंग, इन गिविंग ऑफ अस द अदर मॉलिक्यूल. सो हमने उस रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए, उसको कैटालाइज करने के लिए, बेसिकली वी विल बी गिविंग देम द लाइट और एनर्जी इन एनी फॉर्म. ठीक है, हम उसको थोड़ा सा ट्रिगर करेंगे ताकि वो हमें प्रोडक्ट्स दे. Such reactions which absorb energy from the surroundings are known as endothermic reactions. Most cooking and baking involves the use of energy to produce chemical reactions. You cannot bake a cake or cook an egg without adding heat energy. The most important endothermic reactions occur during photosynthesis. When plants produce sugar by photosynthesis, they take in light energy to power the necessary endothermic reactions. The sugar they produce provide plants and virtually all other living things with glucose for cellular respiration. So we have been studying since I guess one class that there is a process of photosynthesis which requires sunlight, right? We have been studying that there is a process of photosynthesis occurring in plants that will produce food for the plants, and it requires sunlight. The sunlight is also absorbed by the plant, so this process where energy is absorbed in a chemical reaction, we call it as endothermic reactions. Okay, now we are moving towards what's written in your books. Endo means inside. The reactions during which heat is absorbed are called endothermic reactions. An example has been given where calcium carbonate, it is present in the solid state. Ca stands for calcium, CO3 is a group which is collectively known as carbonate. Heat is given to the calcium carbonate and we are getting calcium oxide, and carbon dioxide is released. An experiment has been given. We are not able to do this activity, but in this reaction, if let's read it together. If we take sodium carbonate solution in a beaker or calcium carbonate and insert a thermometer and note down the temperature and mix some calcium chloride solution in it, note down the temperature. If it's an endothermic reaction, then we will observe that the beaker will start to कूल डाउन इटसेल्फ. बीकर जो है वो अपने आप को ठंडा करने लग जाएगा. इसका मतलब है कि उसने जितनी सराउंडिंग्स में एनर्जी है उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है. तो हमने अभी तक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी. वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द अदर वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि एनर्जी को रिलीज करते हैं. अगर कोई बीकर में दोनों रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वन बीकर has exothermic reaction is undergoing, having an exothermic reaction in itself, and the other beaker is having exothermic one. तो जो exothermic reaction वाला beaker होगा वो hot हो जाएगा. ठीक है, it will give off energy. लेकिन जो endothermic beaker होगा वो बहुत cool down हो जाएगा. ठीक है, और वो energy को अपने अंदर absorb कर लेगा. ठीक है, दोनों की एनर्जी प्रोफाइल इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्शन में टेक प्लेस कर रहे हैं, दैट आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शंस, उन्हें या तो एनर्जी चाहिए होती है या वो एनर्जी को रिलीज करते हैं. ठीक है, एनर्जी को रिलीज तब किया जाता है जब मॉलिक्यूल ने स्टेबल होना होता है. गॉट इट? Okay, now we are moving towards the example of endothermic reactions. Simple examples have been given. Calcium chloride will be reacting with sodium carbonate as in the activity we have studied. It will be giving us calcium carbonate and sodium chloride will be produced. Heat is being absorbed in this reaction. It is the, a
very important to absorb heat from the surrounding to for the chemical reaction to occur. इसलिए this reaction is known as endothermic reaction. Similarly, when nitrogen gas combines with two molecules of oxygen gas plus heat is also absorbed from the surroundings, nitric oxide is formed. ठीक है? Then we have hydrogen. Sanabil, I will be answering all your questions at the end. Just wait for a moment. I'm just in a flow. So I will be answering all your questions at the end. Hydrogen will be reacting with iodine gas. Hydrogen gas will react with iodine gas. And heat will be also absorbed from the surrounding. And hence we are getting hydrogen iodide, which is also a gas. ये आयोडीन जो है इट इज़ अ सिमिलर एलिमेंट फ्रॉम द क्लोरीन ग्रुप. जैसे कि हम HCl के बारे में पढ़ते हैं उसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड भी होती है. जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है उसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड भी है. बट देयर इज द चेंज इन दिस स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स इन द केमिकल कॉम्पोजिशन एज वेल, लेकिन द फैमिली इज द सेम. Okay, now we are moving towards, wait a second, yes, now we are moving towards the difference between the two. Endothermic reactions में हमने देखा heat is absorbed by the system, and in exothermic reactions heat is released by the system. In endothermic reactions you observe that the walls of the beaker were getting cold, although you thought, because we didn't perform the activity, so you know that the walls of the beakers are getting cold, so the temperature of the surrounding is decreased because heat is, इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन. सराउंडिंग से हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली गई है, इसलिए जो सराउंडिंग्स का हमारे पास सारा टेम्परेचर था वो डिक्रीज हो गया है. नाउ वी हैव एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. इन रिएक्शंस में हीट को गिव ऑफ किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो जो सराउंडिंग्स का जो हमारा टेम्परेचर होता है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. ओके, देन वी हैव द थर्ड डिफरेंस विच इज जहाँ पे हाई टेम्परेचर सराउंडिंग्स होती हैं. फॉर एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए यू नो दैट हीट इज रिक्वायर्ड, हीट को दिया जाना चाहिए रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, राइट? हीट वहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है. कोई ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हीट ज़्यादा प्रेजेंट हो दैट इज़ मोर फेवरेबल फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि हीट जो है एब्जॉर्ब होनी है. इसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर फेवर्ड बाय अ लो टेम्परेचर सराउंडिंग्स, जहाँ पे ज़रा लो टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो जो हीट होती है वो रिलीज कर दी जाती है इन्वायरमेंट में. इन्वायरमेंट इज कोल्ड एंड हीट इज गिवन ऑफ इनटू दैट इन्वायरमेंट इजीली. ठीक हो गया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ द प्रोसेसेस. इन योर बुक्स इम्पोर्टेंस अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैव बीन गिवन. ओके, now Sanabil has a question. What is, okay, I will be answering it later. It's a general knowledge question. You have asked me two questions. I have noted. Okay, so exothermic process and endothermic process. Okay, Sanabil, your second question is what is calcium chloride? Calcium chloride is basically a drying agent. ठीक है, ये एक सॉल्ट की फॉर्म में होता है. मोस्टली जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के साथ अगर कोई मेटल अटैच होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम और कैल्शियम, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ये कोई सॉल्ट फॉर्म हुआ है. इट्स अ वाइट सॉल्ट. Calcium chloride is basically a white crystalline salt and it is used as a drying agent. ठीक है? I hope you are clear now. So we are going to study about the importance of endothermic and exothermic reactions. Exothermic reactions are very much necessary in our daily life as they are very helpful in making ice cubes. They are very important in the formation of snow. They are important in the condensation reactions for a candle flame, for mixing sodium sulfite and bleach, for rusting of iron, for burning sugar. Similarly, in the endothermic processes are very important in melting the ice cubes. ठीक है, melting the ice cubes. आप जब ice cubes melt होते हैं, आप अपने hand को observe करते हैं, it gets cold. ठीक है, इसका मतलब है कि जो heat है वो surrounding से absorb कर ली गई है, जिसकी वजह से surroundings ठंडी हो गई हैं. ठीक है, इसके अलावा the conversion of frost to water vapor.
then evaporation of water, formation of a cation. Cation is basically a sort of an ion, baking bread, cooking an egg, and producing sugar by photosynthesis. Okay, I'm now stop. Wait a second. Okay,